Hello and welcome to No Spin. I'm Nidhi Razdan. Over the last couple of weeks, India has been witnessing a series of communal clashes during festivals and processions. On Ram Navami last week, communal violence was seen in as many as 7 states. And now Jahangirpuri in northwest Delhi continues to be tense today after clashes on Saturday evening that left 9 people injured, including 8 policemen. This was during another procession on Hanuman Jayanti. 23 people have been arrested so far in Delhi's violence, and the police have rejected claims that only one community is being targeted in those arrests. Among those arrested today is a man named Sonu, seen on video in a blue kurta firing into the crowd the other day. The Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana has also denied reports and videos circulating on social media that there was an attempt to put saffron flags inside the local masjid, leading to the clashes. But the police do admit that swords, pistols, knives and other weapons were among those that were carried by those in the procession that day. They also say the organizers did not take permission for the procession and have now filed a case against them. 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होगा। And just to give you a sense of how widespread these communal clashes have been for the last couple of weeks, just take a look at the map that we're about to show you. From one part of the country to the other, we have seen various religious processions ending up becoming communal flashpoints. And Ram Navami in particular was a bad day, as I said right at the beginning. There were 7 states which witnessed violence just on that particular day. A hate wave is what we are calling it. Joining us first on the program tonight is Mr. Hansraj Hans, the BJP's MP from Northwest Delhi tonight. Hansraj ji, thank you so much for joining us. सबसे पहले if you can tell us अभी क्या हालात हैं वहाँ पे जहांगीरपुरी में? हंसराज जी, इतने सालों से वहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, इस टाइम क्या हुआ? एक तो पहले जिस दिन ये वारदात हुई है, शायद आपकी नॉलेज में होगा, मैं उसी वक्त चले गया था, सारी रात वहीं रहा हूँ, मुझे मेरा फर्ज बनता था। फिर उसी दिन से कंटिन्यूज मुसलसल लगातार चल रहा है सिलसिला। अभी मैं शाम को ये पीस कमेटी, पुलिस ऑफिसर साहिबान और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब, ये हम सब लोग मीटिंग करके आए हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो। बट जो भी हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, ये गुलदस्ता है बहुत सारे धर्मों का, तो आपस में हम सब लोग एक ही हैं। मोहल्ले वाले आज लोग आए थे, कहने लगे जी हमने तो फूलों की वर्षा करनी थी। ये पता नहीं कुछ एक शरारती तत्व होते हैं जो सारी कौम को, सारे एरिया को बदनाम करते हैं। तो मेरी यही हंसराज जी, ये बताइए कि आप मानते हैं कि ये मतलब जिस तरह से ये प्रोसेशन निकला है यहाँ पे, अब पुलिस भी मानती है उनके पास हथियार थे, कंट्री पिस्टल थे, चाकू था, स्वॉर्ड्स लेके चल रहे थे, मतलब इस वो कहते हैं प्रोसेशन को परमिशन नहीं थी आगे बढ़ने की, तो क्या ये पुलिस फेलियर मानते हैं आप? ये कैसे गई ये प्रोसेशन, मस्जिद तक पहुंच गई? जब धार्मिक कोई शोभा यात्रा या ऐसा कुछ हो, बहुत ज्यादा शायद नहीं करते, वो करना चाहिए। अभी सारी तहकीकात होगी, जैसे कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो भी जिस भी धर्म का बंदा गुनाहगार है, तो अभी माननीय अमित शाह साहब जी का भी फोन आया था जब मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि गुनाहगार बख्शा ना जाए और मासूम को फंसाया ना जाए। जी, लेकिन कोई किसी भी धर्म का है, गुनाहगार है, जालिम की फितरत जुल्म है, उसकी कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई लेकिन जब कोई शोभा, जब कोई जैसे आप कहते हैं कोई रिलीजियस यात्रा कोई कर रहा है, somebody is doing a religious procession, हंसराज जी, is there a place for weapons, for swords, for knives? आप मानते हैं कि ये गलत है? अगर ये कोई वीडियो शीडियो या प्रूफ है, एविडेंस है, तो चेक किया जा सकता है कि ये क्यों है। अदरवाइज
कुछ मजहबों में, धर्मों में होता ना, जैसे हमारे सिखों में है तलवार वगैरह जुलूस में जो जब नगर कीर्तन होता है, ऐसा अगर कोई ऐसा है किसी धर्म का तो सिंबॉलिक तौर पे हो सकता है। अगर ये इंटेंशन है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है या किसी को चढ़ाना है या ये माहौल पैदा करना है, तो ये कोई भी धर्म करे, ये बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। ये बड़ा शांत मुल्क है, बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में कमाल के नगमे लिखे गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मसलन हम वननेस को मानने वाले लोग हैं, हमारे रूहानी रहबरों ने यही कहा है कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है। जब एक के ही हम सब वारिक हैं, गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया में घूम के मोहब्बत का, पीस का प्रचार, किस किस लेवल के महात्मा हमें समझाने आए, पैगंबर आए, लेकिन इंसान का जो ज़हन है ना खुराफाती, ये बस वो फंक्शन कहीं ऑफ हो जाए ना शैतान, तो फिर भगवान ही हो सकता है इंसान। जी, तो मैं प्रे करता हूं कि लोगों को अकल आए, सियासतदान वोट बैंक का फिक्र छोड़ दें और धर्मों वाले गुनाहगारों की तरफदारी छोड़ दें। दो चीजें हैं बीमारी की जड़, सियासतदान वोट बैंक का सैक्रिफाइस कर दें। जी, I wish you all the best as you try to sort of, as you say, you're trying to talk to the peace committee and calm things there in Jahangirpuri in northwest Delhi. Thank you, Hansraj ji, for joining us. That was Mr. Hansraj Hans, the BJP member of parliament from that area. Well, joining us on the panel this evening, we have Mr. Neeraj Kumar, the former police commissioner of Delhi with us. Also with us, Shahdan Farasat, advocate of the Supreme Court, Mr. Jay Prakash of the BJP, Jasmine Shah of the Aam Aadmi Party, and Mr. Yogendra Yadav also with us this evening. Let me ask you first, Shahdan Farasat, what do you make of how all of this has played out in the last few days? The Delhi police really came under a lot of scrutiny and indeed was even castigated by the courts for the way they handled the Delhi violence of 2020. They seem to have moved in much faster this time. How do you think they handled it? Yeah, I think firstly I must compliment Mr. Hansraj Hans. I think he spoke like a good constituent, and that's the role of the constituent. He spoke the right language, and I think that's our tradition, irrespective of which political party. That's the Indian tradition, irrespective of which religion you belong to. I think Delhi police, of course, has been its role in 2020 February riots was very questionable, including the way it carried out prosecutions in a selective manner. In this incident, the facts are still coming to the fore who was responsible. But if what the police commissioner says, if he implements that, then that will be, of course, a very welcome step. That whoever is responsible for violence, irrespective of identity, is actually brought to the book and no innocent people are targeted. That has unfortunately not been the experience in the 2020 violence, but if they were to change that and do it afresh, that will of course be a welcome step. It is still early days. I think we will know within 3-4 days or maybe a week as to whether the Delhi police really means a professional business, or is it back to some of the bad investigation and targeted policing which they did in 2020. Mr. Neeraj Kumar, let me get you in here, sir. How do you think the police have handled this? Also, there are some questions being raised. Firstly, it's terrible that the police themselves came, they got injured. Many of their own men got injured as a result of this violence the other day. But a question is being raised as to how this procession was allowed to proceed at all, with them carrying all these weapons, etc. And, got right in front of a masjid. The police version also seems to be, well, yes, they didn't have permission, but since they were going there, we just told them, to make it quick. Is that good enough? See, the point is that theoretically, yes, if you have not given permission for a procession and it still insists on, being taken out, you have two options. Either to use force and disperse the crowd. That means that you are precipitating a riotous situation right from the word go. Or you make an assessment and you say, okay, we'll allow the procession to proceed and maybe they'll maintain peace, we'll ensure that they maintain peace, and especially when they are going through sensitive areas, they will behave themselves. Sometimes these calculations go wrong, and sometimes these calculations are, work well, and things go on peacefully.
Now here, clearly the calculations have failed. And what is, I should say, reassuring to some extent is that not many citizens have been injured. Most of the injuries have been taken by the policemen themselves. The situation was brought under control in no time. Arrests have been made. And as the police chief has said, that the people from the Bajrang Dal / Vishwa Hindu Parishad who have been arrested. And it is not correct to say that only from one community people well, have actually, been... there was something very curious, that happened with that. I just want to point this out, that we got a press statement from the police at about 5:30 saying what you said, Mr. Neeraj Kumar, which was that there was a case against the members of the VHP, the Bajrang Dal, and there was an arrest also made of a VHP leader. Couple of hours later, that was changed with the words VHP and Bajrang Dal missing from the press note, and we were told that no one's been arrested, but the accused has joined the investigation. It was a bit strange, wouldn't you say? No, if that has happened, that is regrettable. Maybe in the press release, the organization need not have been mentioned. But the fact of the matter is, in the ultimate analysis, if people from both the communities have been arrested, that it would show that the police has been fair in handling the situation. Yes, we do know that yes, I think many of them are Muslims, but yes, some from the Hindu community too have been arrested. So we'll have to wait and see how the investigation pans out, as Shadan Farasat rightly said. But Yogendra Yadav, what is worrying is what we pointed out at the beginning. This is not an isolated thing that has happened in Delhi all of a sudden. What is happening with religious processions now becoming flashpoints for communal tension suddenly? Absolutely, Nidhi. And that's why we should not see Delhi incidents in isolation. Clashes would be a euphemism for what we are looking at. These are orchestrated attacks. There is nothing accidental about these things. There is a pattern, there is a design, there is almost a copybook style way of functioning. Take a procession, arm it to the teeth, stop outside a mosque, provoke, provoke, provoke. If the Muslims get provoked, then they are criminals. Then they are in jail, job is done. And if they don't get provoked, then they are cowards and humiliated, the job is done. This is what we are witnessing in case after case after case. And Jahangirpuri doesn't look very different from this standard pattern. There is nothing religious about it. It's not even hooliganism. This is clearly a political design. And the political design is apparent from the manner, in the completely partisan manner in which administration and police functions. I'm very happy that Delhi police is trying to make some belated corrections now. All right, better late than never. But overall, look at what's happening in Madhya Pradesh, in Karnataka, completely partisan manner in which the state acts. The design is apparent from the manner in which bulldozers are used, all kinds of coercive apparatus are used, and the design is apparent, Nidhi, in the silence and acquiescence. The Prime Minister of this country hasn't spoken a word yet. Can you imagine a country where something like this is happening day after day? From the 10th, now we are on the 19th. For 10 days this is happening. The Prime Minister of the country hasn't uttered a word. And acquiescence, because if you look at the only public utterance of the Delhi Chief Minister, it only talks about stones being pelted on the Shobha Yatra, which he says are very bad things. What are we looking at? Okay, in my mind, not to mince words on this, Nidhi, and that's the last point I wish to make. Yeah. What we are witnessing is a de facto change in our constitution. You don't need to have a constituent assembly. You don't need to go to parliament. Change the constitution on the street. Don't allow anyone to protest. Strong words from you. Strong words from you, Yogendra Yadav. Let me take that both to the AAP and the BJP, to Mr. Jay Prakash of the BJP first. जय प्रकाश जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब हम आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जहां भी कोई यात्रा हुई है, कोई प्रोसेशन हुआ है, रामनवमी पे देखिए क्या हुआ। योगेंद्र यादव कहते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल डिजाइन है। आप क्या कहेंगे?
देखिए योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही वो काम तो वो खुद पहले कर चुके। अभी यूपी चुनाव के जब रिजल्ट आए तो योगेंद्र यादव जी ने खुद बोला था कि हमने समाजवादी पार्टी के लिए जो पिच तैयार की थी उस पर अखिलेश जी ठीक से नहीं खेल पाए। आपने देखा दिल्ली के अंदर किस प्रकार से बगैर परमिशन के किसानों के रूप में ये 1 साल तक बैठे रहे, और जब ये फेल हो गए जो उन्होंने पिच तैयार की उस पर वो खिलाड़ी वो ठीक से नहीं खेल पाए। पूरे देश के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में किस प्रकार से अस्थिरता है। इस देश का बहुसंख्यक समाज, रामनवमी पहली बार नहीं आई, हनुमान जयंती पहले नहीं आई, हमारे जो तीज हैं, हमारे जो त्योहार हैं वो पहली बार नहीं आए। जब से धरती बनी है, जब से प्रकृति बनी है, जब से ये देश की संस्कृति सभ्यता सब यहीं पर ही है। जितने भी धर्म हैं सब हिंदू धर्म के बाद ही आए हैं। तो जब हमारे को इस देश के अंदर हम कहते हैं विविधता में अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और हम सबको साथ रहना है। जब मोहम्मद साहब का जुलूस निकलता है और वो मंदिर के आगे से निकलता है, वहाँ हमारे मुस्लिम भाई नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, और मुझे कोई समस्या नहीं आती। तो भाई जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा, हनुमान जयंती का जुलूस निकलेगा, तो जय श्री राम नहीं बोला जाएगा क्या? हर हर माधव नहीं बोला जाएगा क्या? इस देश के अंदर जय श्री राम बोलना, हर हर माधव बोलना, लेकिन जयप्रकाश जी क्या बोल सकते हैं ना एक बात? हिंदू धर्म में ये कहाँ लिखा गया है कि रामनवमी या हनुमान जयंती जब आप अपनी शोभा यात्रा करते हैं तो आपको पिस्तौल भी लेनी है, चाकू भी लेना है, कई गंदे नारे भी लगाए गए हैं, आपने देखा होगा। ये नहीं है कि खाली जय श्री राम बोला गया है, आपको मालूम है, वीडियो है किस तरह के नारे लगाए गए हैं, गाली भी दी गई है। ये सारा सुनिए, ये सारा जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस अच्छे से जांच कर रही है, और दिल्ली पुलिस अगर अलर्ट नहीं होती तो ये जो छोटा सा दंगा दिख रहा है ये पूरी दिल्ली में भी फैल सकता था। लेकिन सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने समय रहते अलर्ट होकर के सब व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन हमें इसमें भी जाना पड़ेगा कि जो ये अंसार नाम का व्यक्ति है, इसे जो टोपी पहन रखी है, कौन सी टोपी पहन रखी है, वो टोपी क्या कहती है, वो किन नेताओं के साथ है? ये दिल्ली में जो हर देश में जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो क्यों संरक्षण दे रहे हैं? अगर कोई हिंदू धर्म को गाली देता है या हिंदू समाज को गाली देता है, उसको संरक्षण देना सही है या गलत है? तो जो भी गलत बोलेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून को काम करना चाहिए। कि क्या शोभा यात्रा में चाकू, पिस्तौल वगैरह वगैरह ये सब होता है, ये सब लिया जाता है? मैंने तो नहीं सुना। देखिए जब हमारे यहाँ ताजे के जुलूस निकलते हैं, ताजे के जुलूस के अंदर सब कुछ साथ होता है, कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। हमारे यहाँ कीर्तन साहब का दरबार, नगर कीर्तन निकलता है। सुनिए, अरे आप मेरी बात तो पूरी सुन ली ना। अगर किसी के हाथ में पिस्तौल है तो कानून जांच कर रहा है ना। वो तो अभी हमारे हंसराज जी ने कितने अच्छे से बताया कि पुलिस अपना काम कर रही है। अगर किसी ने जानबूझ के काम किया है, कोई गलती अनजाने में होती है, उसको माफी मिल सकती है, लेकिन कोई जानबूझ करके देश और दिल्ली के अंदर माहौल को खराब करना कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन बहुसंख्यक समाज को आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप जय श्री राम के नारे पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, आप हनुमान जयंती के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और मैं पूछना चाहता हूँ मेरे सामने जितने पैनलिस्ट हैं, लेकिन गाली देना और किस तरह के नारे लगाए गए हैं उसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। जैस्मिन शाह, no unequivocal condemnation from the आम आदमी पार्टी as योगेंद्र यादव alleges। जयप्रकाश जी, मैं आ जाऊंगी आपके पास वापस, आपसे भी पूछते हैं आम आदमी पार्टी से that Yogendra Yadav saying that even the AAP's condemnation is kind of half-hearted, is it? Absolutely not, Nidhi. We have very clearly condemned the fact that on the same day when the Hanuman Jayanti was being observed across Delhi, Aam Aadmi Party leaders carried out a Shobha Yatra very peacefully. In fact, people from all religions participated in it. And at the other side, BJP leaders carried out this procession in Jahangirpuri. And you see what happened. And we have come out and condemned, and we said that whoever is behind this, be they from any religion, the strictest punishment should be given. But what we were just hearing the BJP spokesperson say is a classic doublespeak that BJP indulges in when it comes to matters of violence. We all know that this particular incident, BJP leaders were behind that, Bajrang Dal was behind that, and it is only because of that that violence happened. Delhi police was there. They saw talwar, they saw chaku, tamanche, all these things. Why did they allow the yatra to happen? And this is not the first occasion.
Before this, they had BJP's state president Adesh Gupta, who barged into DJP office, created ruckus. Is he behind bars today? No, he's still the BJP sitting president. Just a few weeks back, the house of the chief minister was attacked by BJP MP and his Yuva Morcha leaders. Are they behind jails? No, they were given bail. They were welcomed and garlanded by BJP. So BJP today is become a party of goons, party of criminals, party of hooligans. And they do this in daylight, in the national capital, all corners of India. And this is the kind of hate and the environment of hate that is percolating to an average young person who believes that it is fine, it is normal to indulge in violence, because they see examples of BJP leaders, the most powerful party, indulging this day in and day out, and welcoming those who are actually indulging in violence, engaging in this kind of double speak where they refuse to condemn violence by right. people of a certain religion. Okay, We are standing so and saying that no. You've been pretty clear on this today. Jayaprakash ji, just to quickly ask you this before I go back to the others, कि जो आपने कहा कि हंसराज हंस ने कितने अच्छे से, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस एरिया के, कितने अच्छे से उन्होंने अभी बात कही, शादान फरासत ने भी उनकी बात कही, उनका जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे कुछ, गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहे कुछ? इतना कुछ हो रहा है, बोलना नहीं चाहिए उन्हें कुछ? मैं तो ये कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जो जहांगीरपुरी के अंदर घटना घटी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ गायब है? इनके 62 विधायक कहाँ गायब है? पुलिस तो केंद्र के साथ है। ताहिर हुसैन किस पार्टी से लॉ एंड व्यक्ति ऑर्डर था? तो दिल्ली का केंद्र के साथ है। पुलिस तो अपना काम कर रही। अगर पुलिस अपना काम नहीं करती, पुलिस ने 1 घंटे के अंदर, जब घटना घटी 1 घंटे में उसको काबू पाया, और आज भी पुलिस पे पथरा हुआ, आज भी पुलिस पे पथरा हुआ है। पुलिस क्यों सो रही थी? पुलिस 1 घंटे के अंदर अंसार किस भाई साहब, अंसार किस पार्टी का आदमी है? किसकी टोपी पहन रखी है? ताहिर हुसैन किस पार्टी का आदमी है? आपके पार्टी के लोग पूरे दिल्ली के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री के दरवाजे की बात कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से आपके मुख्यमंत्री के जयप्रकाश जी, ये बताइए, ताहिर हुसैन किस पार्टी का निगम पार्षद है? अंसार किस पार्टी का मेंबर है? किस नेता के साथ उसके फोटो खींचे हुए? प्रधानमंत्री हमारे तो सबके प्रधानमंत्री है ना, जिसने टोपी पहनी है नहीं पहनी है, प्रधानमंत्री तो सभी के हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने ये घटनाएं देखी हैं देश में, गृह मंत्री जी, क्या उन्हें कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में? मंत्री जी पूरी निगरानी बनाए रखे हुए हैं, पुलिस लगातार काम कर रही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नेता विपक्ष वहां पर होकर के आए हैं। हंसराज हंस जी पहले दिन से ही वहां पर हैं। हमारे अन्य भी संगठन के लोग वहां जा रहे हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर हम ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली के 62 विधायक कहाँ होम क्वारंटाइन हुए हैं? वो क्यों नहीं आ रहे? अजय यादव वहां के विधायक वो कहाँ गायब है? अजय शर्मा वहां के निगम पार्षद वो कहाँ गायब है? आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? Shadan Farasat, just to come back to this point about the pattern that we're seeing, again, one is watching the courts kind of sitting on the sidelines and seeing things unfold. Do you think that the courts need to step in and take notice suo moto, as they put it in their language? No, I think we are in a very dangerous situation. I mean, so much, it's impossible to even keep count. Every day something new happens. I mean, so... And all of this is adding to the polarization on the ground. It's destroying our youth. It's destroying their sense of how they feel, what it is part of the country. I think it's essential that any institution, be it the court or any other institution, must act, because we are really destroying our country if this kind of thing goes on. Every day there is a new conflagration, and very often it is being politically supported, like Mr. Yogendra Yadav pointed out. So the courts must do more. I strongly feel that, yes. I'm completely out of time today, but this is a story we're going to continue to focus on in the course of this entire week. Thank you very much to all of you for joining us on that big story. Much more on the other side. Thanks for joining us.